Hello everyone, this question appears in class 6th NCERT chapter of ratio and proportion. This is fifth question of its exercise 12.3. So the question says that the temperature dropped 15 degrees Celsius in the last 30 days. If the rate of temperature drop remains the same, how many degrees will the temperature drop in the next 10 days? तो हमें यहाँ गिवन है temperature drop in 30 days. ये गिवन है हमें 15 डिग्री सेल्सियस. So by unitary method, temperature drop in 1 day ये हो जाएगा हमारा 15/30 डिग्री सेल्सियस. सो हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज. सो टेम्परेचर ड्रॉप इन नेक्स्ट 10 डेज. सो ये हो जाएगा हमारा 15/30 इंटू 10. सो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम. सो ये हो जाएगा हमारा 5 डिग्री सेल्सियस. सो 5 डिग्री Celsius will the temperature drop in the next 10 days? That's our final answer. Thank you.